एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी कैसे हैं? आज मैं हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। न्यू टॉपिक जो ऐसे का टॉपिक है उसका नाम है द रिपब्लिक डे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इससे पहले आपको मैं बता देती हूँ, और भी मैंने ऐसे की वीडियोस बना रखे हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं सो दैट आपको बेनिफिट हो उससे। और भी लेटर ऐसे जो लेटर राइटिंग है उसके ऊपर भी वीडियोस हैं, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी और वहाँ से आप चेक कर लीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोई ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए। जैसे ही आप बढ़िया इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उससे सामने वाले पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो कंटेंट भी अच्छा होगा ही, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही उन्हें एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। और इंट्रोडक्शन पार्ट, कंक्लूज़न पार्ट, ये मेन पार्ट होते हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे में लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो और भी ऐसे इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको भी देखिए। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th day of August 1947. Before it we were slave. India was under the British rule. We got independence on August 15, so it is called Independence Day. India became a republic on 26th January 1950. So it is called Republic Day. Republic means a state whose head is elected by the people. It was so because the new constitution of Free India came into force on this day. Because there was no constitution in India. No presidents were there. Dr. Rajendra Prasad was elected the first president of India, Free India. रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन नेक्स्ट टॉपिक है इसका, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, हेडिंग है इसका रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे लाइक इट, वी ऑल्सो सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे. It is celebrated in every village, town, city of India and capital of each state, as well as in Delhi, the capital of India. Its celebration has a great significance. It is celebrated at India Gate in Delhi at the national level. On this day, it is the President of India who unfurls the national flag. He takes the salute presented by 3 wings of army, police, NCC and other important personalities. People from all over the country come to see the Republic function. Procession at India Gate. Next heading. The Republic Day procession starts at 8 a.m. from India Gate, Delhi. A running commentary on the program is broadcasted by Dehradun, Doordarshan and All India Radio. In schools, it is celebrated at different times. About 10,000 persons from the Army, Navy and Air Force take part in the procession. The latest progress of the country is shown in different forms. Cadets of NCC, ACC, Boy Scouts, Girl Guides also take part. Teams of students from different schools were also present to show their PT exercises. As a last item of function, colored balloons go into sky and celebrations comes to end. Tricolor of national flag by aeroplanes is a memorable show. Different peculiar culture and industrial and agriculture progress in different displays state-wise are charming and pleasant. Here we see the unity of India at one spot. Celebration in school. Next heading. National flags are hosted at every state capital and important cities by concerning authorities. Our school also celebrates this function every year. A chief guest is invited for this ceremony. We prepare different items: PT exercise, parade,
speeches, and some alive models of freedom fighters. Parents and other important persons are invited. A good knowledge about our freedom struggle is described by the teachers as well as students. We promise to serve our country and to be an honest and responsible future citizen. Now, लास्ट में हम इसे ऐसे को कंक्लूड कर देंगे. Conclusion. We love our country. We are ready to sacrifice everything to safeguard our freedom. This day reminds us of the sacrifices suffered by our forefathers. It also points out our future responsibility. We feel proud to be Indian. That's it for today video guys. Hope आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा. किस तरह से आपको ऐसे लिखना है, किस तरह से आपको कंक्लूड करना है एट द एंड ऑफ द ऐसे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को एक थम्स अप, एक लाइक ज़रूर दें और लाइक करने में आप कंजूसी बिल्कुल भी ना करें. और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दे सकते हैं. अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस ऐसे को शेयर कीजिए सो दैट उनको भी हेल्प होगी, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियोस के लिए. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने और भी ऐसे के लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. जिस भी ऐसे की आपको नीड होगी आप वहाँ से देख सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जामिनेशन. होप आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हों.